अंकित है ऑफिस में, वो जल्दी से वो रोटरी वाला निकाल करके एसएनसीयू में चला जा। वो लेक्चर खत्म होएगा, वापस लेके आ जाना, 2-4 फोटो खिंचा लेना, ठीक है? जा चला जा प्लीज, भाग के। सुधार की शुरुआत आज से होनी चाहिए, कल बहुत देर हो सकती है। With these words, I, Dr. Vibhuti Nagta, extend a heartfelt welcome to all the dignitaries on the lecture titled Independent India Belongs to the Constitution, organized by Department of Laws, Punjab University, in memory of a remarkable leader, Srimati Sushma Swaraj, former External Affairs Minister. We have all gathered to pay tribute to Srimati Sushma Swaraj on her third Punya Smriti. It is a matter of great honor for us to have been joined by eminent dignitaries. We have with us today Professor Rajkumar, Honorable Vice Chancellor, Punjab University, Ms. Kansuri Swaraj, Chief Guest of the event, Shri Satyapal Jain, Additional Solicitor General of India, our special guest, Professor Balram K. Gupta, Guest Speaker of today's event, Professor Anupama Bahari, Dean Alumni Relations, Punjab University, Professor Devinder Singh, Chairperson, Department of Laws, and Dr. Babita Patania, Coordinator of today's event. I also extend a heartfelt welcome to faculty members, students, and guests who have joined us today. May I now request Professor Devinder Singh to formally welcome the guests. Before formally welcoming our guests, I now request Dr. Manisha Garg to kindly introduce the guests of today's event. Hello everyone. First of all, I would like to introduce our chief guest, our guest speaker of the day, Professor Dr. Balram K. Gupta. First of all, I would like to introduce our worthy Vice Chancellor, Patron Chief, that is Professor Dr. Rajkumar. Professor Dr. Rajkumar is a distinguished academician, researcher, and educational administrator. Sir completed his PhD from Banaras Hindu University and Doctor of Literature from University of Lucknow. Sir brings with him a rich mixture of professional integrity and administrative experience. Sir has been actively engaged in teaching, research, training, and consultancy in the management field for more than 3 decades. Sir has been the Director, Dean, and Head of the Institute of Management Studies, Banaras Hindu University, Varanasi. Sir has wide exposure in the administration and day-to-day functioning of the university. As an accomplished teacher and educationist administrator, his focus has always been on quality. Under his dynamic leadership and guidance, Punjab University has been adjudged as best university in the country by US News and World's Report Ranking 2019. In NIRF Ranking 2019, University bagged 21st position and University Institute of Pharmaceutical Sciences ranked second among pharmacy institutions in the country. It is a credit to his efforts that innovation and incubation has got a major thrust in the university, which is reflective in Punjab University achieving 9th spot in Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements Ranking List as released by MHRD in the month of March 2019.
Because of his consistent efforts, university has been sanctioned grants for the new girls hostel, expansion of Human Resource Development Center, and for setting up a center for academic leadership and educational management. Now I request sir to address. Now I would like to give an introduction of our chief guest, Ms. Bansuri Swaraj. Ms. Bansuri Swaraj is an advocate practicing in the Supreme Court of India. Ma'am is the daughter of late Shrimati Sushma Swaraj. She did her graduation from Oxford University, England, and attained barrister at law degree from Inner Temple, London. She has been an eminent lawyer who has been practicing since 2007. She mainly handles civil, commercial, taxation, and constitutional related matters. She is currently practicing in the Delhi High Court and Supreme Court of India. We welcome you, ma'am. We welcome you. Our next guest is the speaker of the day, Professor Dr. Balram Gupta. Professor Dr. Balram K. Gupta is a senior advocate who hails from Chandigarh. He is a rare mix of academic and professional lawyer. Having graduated in law in 1966 and masters in 1968, he started his career as a parliamentary fellow at ICPS New Delhi. In 1969, Sir joined the Faculty of Law, Punjab University, Chandigarh. Sir is the second one to complete his PhD in law from Punjab University. His doctoral work was on constitutional feasibility of Ombudsman Lokpal in India. Research work was compared with the best of writings on this subject, even in the advanced countries of the world. The work was found useful in drafting legislation in his domain. He became the youngest professor of law in 1983. Sir remained professor and chairman, Department of Laws, Punjab University from 1986 to 1989. In 2006, Sir was honored with the State Award of Nyaya Ratan by Agarwal Foundation, Punjab, with the citation. Judicial, stately, magnanimous, learned, and awe-inspiring are only some of the adjectives which help define the persona named Professor Dr. Balram Gupta. In 2008, he was honored as Distinguished Alumni on the occasion of Annual Jubilee celebrations at Punjab University, Chandigarh. In 2011, on the occasion of Silver Jubilee celebration, the Central Administrative Tribunal Bar Association, Chandigarh, honored Sir for his invaluable contribution. In 2016, Sir was honored with the Lifetime Achievement Award of Rotary International for connecting Rotary and judiciary through his writings and talks. He is Paul Harris Fellow and has been a Rotarian for the last 43 years. In 2017, he was declared by the Division Bench of the High Court of Uttarakhand in its judgment in the matter of Lalit Miglani versus State of Uttarakhand as loco parentis, the human face to protect, conserve, and preserve all glaciers, including Gangotri and Yamunotri rivers, streams, rivulets, lakes, meadows, jungles, forests, wetlands, grasslands, springs, and waterfalls in the state of Uttarakhand. In 2019, on the occasion of first Global Alumni Meet of Punjab University, Sir was honored as a distinguished achiever with the citation, his stellar contribution to the field of law. As a professor of law, senior advocate, and judicial educator, he has made his mark in every aspect of his chosen field. In August 2021, he was appointed as Honorary Professor Emeritus for Life at MIT University, Punjab. He has earned the unique distinction of being both Professor Emeritus and Senior Advocate, probably the only one in the country with both the recognitions. We welcome you, sir. Next. Now we would like to introduce our special guest for today, Mr. Satyapal Jain. Sir is a member of the Law Commission of India, born in 1952. Sir did his schooling from Christian High School, Kharad. Sir passed his BA in 1973 from Government College of Education, Chandigarh, and MA in Political Science from Punjab University, Chandigarh in 1975. Sir is a member of BJP National Executive. He remained a member of Parliament from Chandigarh Parliamentary
constituency for 2 consecutive terms. Sir is a designated senior advocate practicing in the Supreme Court of India, Punjab and Haryana High Court at Chandigarh, as well as other high courts. Sir is currently serving as an additional Solicitor General of India. We welcome you, sir. Now I request Professor Davender to formally welcome all the chief guests of the day. Very good afternoon to the guests of the day. I feel a little bit sorry for the things which are happening because there are some going on in the Department of Laws, and we have to reschedule our program in the morning to some other building. Therefore, it is our fault that we have taken the things like this. But we are that this is the third Punya Smaran of our illustrious alumnus, Shri Sushma, who has been in the department and department always continue to feel proud. ये हमारा सौभाग्य है कि सुषमा स्वराज जी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के साथ जुड़ी और उसके बाद देश में पब्लिक लाइफ में उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया उसमें जितना सम्मान उनका आज है उसका सारा गर्व जो है हमारा लॉ डिपार्टमेंट महसूस करता है। आज इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा जो प्रेरणा स्रोत हमारे रहे हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार जी, जिनकी गाइडेंस में, जिनकी ब्लेसिंग्स के साथ जो हमेशा अपने एलुमनाई को याद करने के लिए हमेशा प्रेरित सब डिपार्टमेंट्स को प्रेरित करते हैं। He motivated us and we are continuing this with this. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में टाइम देने के लिए और यूनिवर्सिटी को मार्गदर्शन के लिए। जिस तरह से आप यूनिवर्सिटी का मार्गदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह से यूनिवर्सिटी आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है, मुझे लगता है कि इस तरह से अगर हम कार्यक्रम करते रहेंगे और अपने एलुमनाई को ही याद करते रहेंगे तो यूनिवर्सिटी आने वाले समय में आपके मार्गदर्शन में, आपकी लीडरशिप में और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ऐसा हम सब लोगों का प्रयास रहेगा। आज मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं और वेलकम करना चाहता हूं सुषमा स्वराज जी की सपुत्री बांसुरी स्वराज जी का। ये दूसरा मौका है जब उन्होंने आज एक विशेष दिन के लिए, उनके लिए और भी प्रायोरिटीज हैं, उनके लिए और भी कार्यक्रम हैं, लेकिन उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट को ही चुना कि हमें टाइम देंगे। इसके लिए मैं मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिपार्टमेंट के बिहाफ पर और इसके लिए हमेशा आपका ग्रेटिट्यूड फील करता हूं और आगे भी आप डिपार्टमेंट के साथ जुड़े रहेंगे, डिपार्टमेंट का मार्गदर्शन करते रहेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आपका पुरजोर सारी फैकल्टी के बिहाफ पर, सारे स्टूडेंट्स के बिहाफ पर स्वागत करता हूं। बलराम जी गुप्ता जो श्रीमती सुषमा स्वराज जी के अध्यापक भी रहे, उनके समय की जितनी यादें डिपार्टमेंट में हैं उन सबको इन्होंने देखा, सुना और आगे इनका प्रचार प्रसार भी किया। इसलिए आज विशेष रूप से हमने बलराम जी गुप्ता जी से, जो हमारे प्रोफेसर एमिरेटस भी हैं, हमारे फॉर्मर प्रोफेसर्स भी हैं और व्यक्तिगत तौर पर हमारी सारी फैकल्टी के मार्गदर्शक भी हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया और वो बहुत बिजी भी थे। बिजी इसलिए थे कि इनका कहीं दूसरे शहर में कार्यक्रम है। मैं व्यक्तिगत तौर पे डिपार्टमेंट नहीं आ सकता, लेकिन मैं जुड़ूंगा जरूर और ये मेरा सौभाग्य है, ऐसा उन्होंने कहा। इससे हमारा मनोबल सर और बढ़ जाता है और आप हमारे साथ आए, आपका बहुत स्वागत है सर। और आगे भी आपका मार्गदर्शन मिल रहा है, मिलता रहेगा, ऐसी उम्मीद रहेगी। ये जैसे मैंने कहा कि ये तीसरा कार्यक्रम हम कर रहे हैं और तीसरा कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम हमने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेंटर से किया, दूसरा कार्यक्रम लॉ डिपार्टमेंट के माध्यम से किया और तीसरा पुण्य स्मरण हम आज फिर लॉ डिपार्टमेंट के माध्यम से कर रहे हैं। इन तीनों में अगर कोई विशेष चीज है तो वो माननीय सत्यपाल जैन जी हैं, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और फॉर्मर एमपी हैं, फॉर्मर डीन हैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के और पंजाब यूनिवर्सिटी के बहुत सीनियर फेलो हैं, मेंबर सेनेट, मेंबर सिंडिकेट। ये तीनों कार्यक्रमों में रहे क्योंकि ये श्रीमती सुषमा स्वराज जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने पब्लिक लाइफ में भी काम किया है, व्यक्तिगत तौर पर भी दोस्त रहे हैं, पारिवारिक तौर पर भी दोस्त रहे हैं, इसलिए इनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिल जाता है। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य भूमिका हमारे जो डीन एलुमनाई हैं,
प्रोफेसर अनुपमा शर्मा, उनका योगदान रहा, मैं उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और इस सारे कार्यक्रमों को, इस मंच को सजाने के लिए आरएसएस के प्रचारक विस्तारक दयानिधि जी का बड़ा योगदान रहा, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आगे वो हमें ऐसे ही हमारी मदद करते रहेंगे और हम कार्यक्रमों का आयोजन आगे भी करते रहेंगे। मेरे टर्न का भी है, इसमें सैलरी इस स्लिप भी है, कार्यक्रम इसमें की फॉर्म 16 भी है, संयोजक हैं, ये फोल्डर में डाल कोऑर्डिनेटर दिया, हैं इसे और इन्होंने 2-3 दिन से जो लगातार इनकी सारी टीम जो है उन्होंने मेहनत की है, मैं इनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। फैकल्टी मेंबर्स कुछ मेरे साथ यहाँ हॉल में बैठे हैं और कुछ साथ जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और उनकी मोटिवेशन से ही डिपार्टमेंट आगे बढ़ रहा है। ऐसा ही सहयोग सबका आगे के लिए मिलता रहेगा, इस उम्मीद के साथ सबका स्वागत करता हूं। और डिपार्टमेंट अभी फंक्शनल नहीं है, अभी वेकेशंस चल रही हैं। 9 तारीख से डिपार्टमेंट शुरू होगा, स्टूडेंट्स तब डिपार्टमेंट में आएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स खास तौर से इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़े हैं। टीचिंग आज के जो अगर उनको प्रेरणा कुछ मिल पाएगी इस कार्यक्रम से, तो वो आगे के लिए हमें प्रेरणा और देगी कि इससे अच्छा हम कार्यक्रम करें। यूनिवर्सिटी लेवल पर इसी साहब भी इधर हैं, माननीय सत्यपाल जैन जी भी इधर हैं, श्रीमती सुषमा स्वराज जी की सपुत्री भी यहाँ हैं। हम लगातार प्रयास में हैं कि हमारे बहुत जी आप आ रहे हो, लेकिन सब में इलस्ट्रेट हमारे श्रीमती सुषमा स्वराज जी ही। हाँ अगर आप क्या कह रहे हो? हमारे नहीं, किसी और से, अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल में एक चेयर स्थापित कर सकें जिससे ये एक पूरे दुनिया को, पूरे देश को और सब पब्लिक लाइफ में का अनाउंसमेंट हो जाए कि जो एक ऑरा सुषमा स्वराज जी ने क्रिएट किया देश और दुनिया के अंदर, उसमें मुख्य भूमिका जो थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी की थी, लॉ डिपार्टमेंट की थी। ऐसा श्रेय हम लेने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर उनके नाम से एक चेयर स्थापित हो, परमानेंट लेक्चर स्थापित हो। हालांकि लॉ डिपार्टमेंट तो हमेशा उनका ऋणी रहेगा और वक्त पर उनको याद भी करता रहेगा, लेकिन ये स्मृति एक परमानेंट रूप में पंजाब यूनिवर्सिटी को मिले, इसके लिए ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब का मार्गदर्शन हमें मिल रहा है और हो सकता है आने वाले समय में हम इसमें कामयाब भी हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार दोबारा मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम को शुभ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए मैं सारी टीम को एक बार फिर बधाई देता हूं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हूं। धन्यवाद। Thank you, sir. I now request our chief guest, Ms. Bansuri Swaraj, to kindly share her thoughts with us. Thank you very much. साहब ने क्या बोला? Respected Professor Dr. Balram Gupta ji, respected Shri Satyapal Jain ji, the Vice Chancellor of Punjab University, Dr. Rajkumar ji, Chairperson Dr. Devendra Singh ji, Dr. Babita Pathania ji, Dayanidhi ji, and Dr. Sunil Kumar ji, the faculty of Punjab University, students, ladies and gentlemen. I am very grateful to the Law Department of Punjab University for organizing today's lecture in the memory of Srimati Sushma Swaraj. It gives me immense pleasure to celebrate Ma's accomplished life with her teacher, Dr. Balram Gupta ji, and her brother, Satyapal Jain ji, and of course, all of you. देवेंद्र जी, आपने कहा ये श्रेय आप लेने का प्रयास कर रहे हैं, ये श्रेय लेने का आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुषमा स्वराज लॉ डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी का ही प्रोडक्ट हैं, वो आपकी ही एलुमनाई हैं और इसीलिए ये श्रेय आपको पूरा मिलना चाहिए। Today's topic, Independent India belongs to the Constitution, is extremely befitting to commemorate the life of Sushma Swaraj, because she was a child of a revolution. Her dedication to the principles of the Indian Constitution reflected in her day-to-day work. She fiercely protected the rights enshrined in the Constitution of India because she had witnessed firsthand how those rights were robbed during emergency for the sake of the ambitions of one person. Let's take a step back. अगर इतिहास की तरफ हम मुंह मोड़ के देखें तो हमें दिखता है that in 1946 the Constituent Assembly worked towards the framing of the Indian Constitution.
Every article was thoroughly debated by the members of the Constituent Assembly, who sat for 11 sessions and 167 days to frame the Constitution over a period of 2 years and 11 months. मैं ये अवधि आपके सामने क्यों पेश कर रही हूँ? ये अवधि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि संविधान का एक एक पहलू बहुत ही सोच समझकर विचार विमर्श कर तराशा गया था। लेकिन 25 जून 1975 को ये सारे के सारे अधिकार हमसे एक रात में छीन लिए गए जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने सत्ता के मुंह में संविधान की बलि चढ़ाने के लिए वो तैयार हो गई। In 1971, Lok Sabha elections happened and Mrs. Gandhi defeated Shri Raj Narayan ji from Raebareli constituency. Mr. Raj Narayanan then challenged the election before the Allahabad High Court on the grounds that Mrs. Gandhi had used government officials for personal election-related work. On the 12th of June 1975, the Allahabad High Court found Mrs. Indira Gandhi guilty of electoral malpractices and debarred her from holding any elected post. The Honorable Supreme Court of India on 24th of June 1975 did not grant blanket stay to Mrs. Gandhi, and whilst finding merit in the Allahabad High Court's order, disallowed her from participating in any proceedings of the Lok Sabha. She was debarred from voting or even drawing the remuneration in the capacity as an MP. This triggered the darkest chapter in the history of independent India. 200 साल की गुलामी के बाद बहुत संघर्षों से हमने आजादी हासिल करी थी और एक रात में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का बहाना बनाकर इमरजेंसी हम पर थोप दी गई। संविधान को दरकिनार कर दिया गया और यह प्रचार किया गया, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। जब अधिकारों का दमन होने लगा, लोगों को अरेस्ट करके जेलों में भरा गया, तब श्री जयप्रकाश नारायण ने हुंकार लगाई, आप जैसे विद्यार्थियों का आवाहन करा और ऐसे में ही आपके पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट की एक बच्ची सुषमा स्वराज निकल पड़ी जयप्रकाश नारायणन के आंदोलन का हिस्सा बनने और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने। In 1977, the then regime had to finally cave in and fresh elections were called. India chose democracy over dictatorship and the Janata Party came to power under Shri Morarji Desai. Sushma Swaraj fought her first election in 1977 in response to emergency and won a seat in the Haryana Legislative Assembly. She went on to become the youngest cabinet minister at the age of just 25, holding 8 portfolios simultaneously. इमरजेंसी का अध्याय हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, पर इसको जानना अति आवश्यक है क्योंकि ये सबक हमें लेना है ताकि कोई भी भविष्य में हमारे संवैधानिक अधिकारों को इस तरह छीन ना सके। भारतीय संविधान की यदि बात करते हैं तो ये कहना जरूरी है that the Indian Constitution is a very compassionate document. Enshrined within the preamble itself are the values of liberty, equality, fraternity, and justice. The Constitution provides for creation of a conducive environment where every citizen can live, prosper freely and without any fear. Sushma Swaraj was the epitome of compassion, and therefore I shall draw a parallel here. कि सुषमा स्वराज तो करुणा की प्रतिमूर्ति थी। मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने अनगिनत लोगों को जटिल से जटिल परिस्थिति में से निकालकर भारत को सुरक्षित वापस लेकर आ पाए। She ensured that the Ministry of External Affairs became accessible to the people through the use of social media. It is extremely encouraging to see that under the able leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, now the justice system of India is also being made accessible to the common man through the digital revolution that is happening in India. In the recent address at the first All India District Legal Services Authority meet, the Honorable Prime Minister spoke about India's potential of mass digitalization. The government is encouraging
establishment of e-courts, virtual hearings, and e-filings. Technology is being used to ensure that the constitutional rights are truly practiced and don't remain merely bookish ideals. In the end, I would like to say that there is an extraordinary responsibility on the legal community and the judiciary in India to be the guardians of the Constitution. सुषमा स्वराज को सच्ची श्रद्धांजलि स्मारकों में नहीं है, पत्थरों में नहीं है, बल्कि करुणामय कर्मों में है। आप जब भी वकालत में आए, मैं यहाँ के स्टूडेंट से बात कर रही हूँ कि आप जब वकालत में आए तो मेरा अनुरोध है कि आप संवेदनशीलता से प्रैक्टिस करिएगा। आप में से कई लोग जज बनेंगे तो कृपया संवेदनशीलता के साथ ही निर्णय लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपको मौका मिले और यदि आप किसी की मदद कर सकें तो मदद जरूर करिएगा, क्योंकि जब भी आप किसी की मदद करेंगे तो सही मायने में सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि वही होगी। आपने आज मेरे लिए समय निकाला और माँ को आज इस तरह याद करा, ये श्रद्धांजलि समारोह आयोजित करा। मैं आपकी ऋणी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं इससे पहले कि ऑनरेबल वाइस चांसलर सर को इनवाइट करूं, डिपार्टमेंट humbly acknowledge and welcome the special and gracious presence in this electronic form in the webinar of Shri Maxreen ji, Shri Yudhbir ji, Arun Grover ji, Praveen Goyal ji, various chairpersons of the department, senior teachers from the university. I again welcome each and everyone on this platform. Now, may I request Honorable Vice Chancellor, Honorable Professor Rajkumar ji, to speak on this occasion. Sir, please. Thank you, Professor Devendra ji. At the outset, the chief guest of this event, Susri Mansuri Swaraj ji, guest speaker Sri Balram Gupta ji, special guest Sri Satyapal Jain ji, a very good number of the faculty members, chairpersons, head of departments, deans, dear students, ladies and gentlemen. At the outset, I welcome each one of you, and from the core of the heart, from the side of the Punjab University fraternity, I pay the tribute to the departed soul, a great soul, very pious soul, for which we are here. I can understand the feeling of the lovers of great soul that confined not to particular domain, not confined to a particular, it has the widespread impact on the everyone's mindset. सुषमा स्वराज जी के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो शायद बहुत ही कम होगा। एक ऐसा व्यक्तित्व जिस पर न जाने कितने रिसर्चेज हो सकते हैं। एकेडमिशियंस की हैसियत से और एक मैनेजमेंट साइंटिस्ट की हैसियत से मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि सुषमा स्वराज का जो मैनेजियल स्किल थी वो अद्वितीय थी। उसने न केवल पार्टी को बल्कि जो भी जिम्मेदारी उनको समय समय पर, चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट के दरमियान उनको दिया गया हो या पार्टी के हैसियत से दिया गया हो या संगठन की हैसियत से दिया गया हो या जब वे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रहीं, उस समय भी उन्होंने उसको बखूबी उसका निस्तारण किया। दो एक पहलुओं पर मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन चूंकि आज जो है माननीय सुषमा स्वराज को याद किया जा रहा है, अब उनके बारे में जो चीज़ें कही जाएंगी उसका तुरंत प्रभाव हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मानस पटल पर पड़ेगा और उनके हमारे आपके द्वारा उनके बारे में कोई भी शब्द निश्चित रूप से उनको एक दिशा निर्देश देंगे
जो कि आज के इस विचार गोष्ठी का महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी है और महत्वपूर्ण प्रभाव भी है। इस पर हम लोगों को बड़ी ईमानदारी से बोलने और सुनने तथा कहने की भी ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो सुषमा जी का जो जो पहलू, उनके व्यक्तित्व का जो पहलू सबसे टचिंग रहा, वो ये रहा कि अगर आप ये देखें कि ऐसे परिवार से जो कि लाहौर से जिसने यात्रा शुरू की, लेकिन उन्होंने जो है हरियाणा में जो पॉलिटिकल जो उन्होंने एक इनिंग शुरू की, उसमें उनका फोकस बराबर एक सशक्त महिला के रूप में रहा, जो कि एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि उस ज़माने में जब हमें लगता है कि उन्होंने पहला इलेक्शन 82 में शायद जीता था जो है असेंबली का, 77 या 82 में, तो उस समय जो है क्या स्थिति रही होगी हरियाणा में अगर हम फीमेल डेमोग्राफी की बात करें, और ऐसे ऐसे स्टेट में जहाँ पर इम्बैलेंसेज जो है सेक्स रेशियोज के रहे हों, वहाँ पर उनकी आवाज़ कितनी सशक्त एक संकेत के रूप में पूरे पूरे इंडिया में फैली, और उसने एक नेतृत्व दिया महिला सशक्तिकरण का, महिला नेतृत्व का, जिसकी आज भी जो है लोग लोहा मानते हैं। जब मैं लोकसभा का डिबेट सुनता हूँ, आज भी मैं कभी-कभी जो है वो देखता हूँ, पुराने जो हमारे सांसद रहे, उनकी आवाज़ में जो एक खनक रहती थी, उनके जो फैक्ट्स रहते थे, उनको जो है विपक्ष को जो को संवेदनशील बनाने में जो उनकी पहल रहती थी, वो शायद बहुत ही कम जो है सांसदों में आज देखने को मिलेगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू उनके व्यक्तित्व का ये था कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है अक्रॉस पार्टी थी। किसी भी पार्टी के लोग हों, लेकिन सुषमा स्वराज का की पहुंच हर सांसद तक किसी न किसी रूप में रहती थी। और अंतिम चीज़ करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जब अभी एचओडी प्रोफेसर देवेंद्र जी ने कहा कि ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जो है चेयर की बात उन्होंने कही, मैं आज इस सभा के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस पर हम लोग काम शुरू कर चुके हैं। और चूंकि हमारे पास जो है वो ये एक लीगल जो हमारे स्ट्रक्चर, गवर्निंग बॉडी का स्ट्रक्चर था, वो पूर्ण रूप से नहीं बना हुआ था। आज हमारे पास जो है वो गवर्निंग बॉडी का स्ट्रक्चर बन चुका है, और जल्दी ही हमारा फाइनल ड्राफ्ट इसके बारे में जो है तैयार हो करके जल्दी ही हम आपके सामने ले आएंगे। और सुश्री बांसुरी जी से भी मैं इसके बारे में जो है, और जो हमारे यहाँ पर माननीय सदस्य भी हैं, साथ ही साथ लीगल एक्सपर्ट हैं, उनके बारे में भी जो है उनसे भी मैं इसके बारे में विचार विमर्श करूँगा। ये एक पक्ष ये है कि चूँकि वो पॉलिटिकल साइंस की थी, और इसके साथ ही था लॉ का भी उनका था, उनका इंटरनेशनल रिलेशन भी था, जिसके बारे में उनकी जो है तमाम सारे जो है उनके कंट्रीब्यूशन है। उन सब बातों को लेकर के जो है थोड़ा-सा हम लोग जो है सोच रहे हैं कि किस नाम से और किस रूप में, नाम तो क्लियर है कि जो है माननीय सुषमा स्वराज के नाम से ही चेयर होगी, लेकिन किस विषय में उसको दिया जाए, क्योंकि उनकी जो है माँग हर डिपार्टमेंट में है। वो कभी-कभी जो है वो अच्छा भी लगता है, कभी-कभी जो है प्रशासक के लिए एक समस्या भी पैदा होता है कि किस विभाग को दिया जाए उसको। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उसको जो है वो तो मैं फर्दर लाइट साइड के दृष्टिकोण से मैं आपके सामने कह रहा हूँ, लेकिन ये सब ये चीज़ें हम लोग जो है बहुत जल्दी के रूप में जो है इसको यहाँ पर एक अंतिम उसको मुकाम देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः जितने यहाँ पर अतिथि हमारे आए हुए हैं, साथ ही साथ पंजाब यूनिवर्सिटी फ्रेटर्निटी के लोग हैं, इस तरह के जो है आयोजन सुषमा स्वराज के बारे में केवल साल में एक बार आयोजन नहीं होने चाहिए। हम पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हैसियत से मैं यहाँ पर ज़रूर निवेदन करूँगा कि माननीय जो है बांसुरी जी को फिजिकल रूप में मैं एक बार मैं ज़रूर निवेदन करूँगा कि हमारे विश्वविद्यालय में आवें, और कम से कम जो है यहाँ के आपके आने से, आपके केवल एक आवाज़ से हमारे बच्चों में एक अलग तरह की जो है एक वाइब्रेशन और एक प्रेरणा मिलेगी। और आप तो आपका जो है फेशियल अपीयरेंस भी
तो एकदम जो है माननीय सुषमा स्वराज जैसा ही लगता है जो है। आप उनकी बेटी हैं तो लगेगा ही। तो इन दिस वे वंस अगेन आई ग्रीट ईच वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच। Thank you, sir, for sharing your valuable thoughts with us. I now request Professor Balram Gupta, our guest speaker, to kindly share his valuable thoughts with the participants. And the topic for today's lecture is Independent India Belongs to the Constitution. Sir would be sharing his valuable thoughts on the same topic. Dr. Saab, you can't be heard. You're on mute. Sir, please unmute yourself. Thank you so much. Professor Rajkumar, the Vice Chancellor of the university, and the paterfamilias of this university. This university where I've spent 22 meaningful years. I feel honored this afternoon to have been given this opportunity. Daughter Bansuri Swaraj, a true reflection of Sushma Swaraj. I've heard her the second time today. It gives me such a good feeling that you are a daughter who is having the same traits which your mother had. I feel so good. And to share further, Swaraj, one of the passionate desire was, which he shared with me many a time, to make you a barrister. He would often tell me that I want to see her as a barrister. And I feel so good this afternoon. Not only you are a barrister, a graduate from Oxford, and now practicing in the Supreme Court. Therefore, my blessings to you in this particular context. Mr. Satyapal Jain, with whom I have enjoyed a long association, both at the university as also at the bar. Professor Davinder Singh, again, a long association with him at the department and in the university. The faculty of the university, the dean of university instructions, the lawyers, Max Reen, Praveen Goyal, and many others as such. The judges, the Rotarians, past district governor Arun Sharma, and Dr. Rita Kalra, and galaxy of other persons who are assembled. This is reflective of how Sushma Swaraj was really actually feeling about the entire contribution that she made. Personally speaking, I have enjoyed 50 long years association with her and would love to share some of the glimpses. And in that context, she joined the Punjab University Department of Laws in 1970 and graduated in law in 1973. These 3 years were action-packed.
She was the life of the university, the cultural activities, but primarily her debating skills, her declaiming skills. I recall those days. She would prepare, come every day in my room, rehearse. And whenever there is a competition on the Punjab University campus or in Chandigarh, I invariably love to go along with her. She would speak, back the first prize, back the trophy also. And the beauty of the relationship with her was, after winning, getting the prize, she would come running to me, hug me so affectionately. That was the beauty of that relationship. And this particular aspect, we also nurtured her into this particular skill of oratorical skills that she demonstrated in her future career. May it be the United Nations, the Parliament, or any other forum, kind of contribution that she made was tremendous. I would like to share some of my personal glimpses. 1998, she was the Union Minister. I requested her for a Rotary Club function in Chandigarh. She came for that. And when she spoke, she says, भैया ने जब रिक्वेस्ट की तो मैं ना कैसे कह सकती थी. And she says, when I look back, what foundational contribution that you have made. I felt so humbled in that situation. In the year 2001, I had constructed my own house. She was again the Union Minister. She came home and came with the marble Ganesh Murti and installed in my office. How can I forget such a gesture on her part? 2013, I went to the National Judicial Academy. She happened to come to Bhopal. I requested her to come home. She came home, spent 2.5 hours for dinner. In fact, before that, I asked her, what would you like to eat? And you know what was her response? My bhabhi knows what I like to eat. Don't interfere. That evening was a joyful evening. We talked, we laughed, we enjoyed. Exclusive, absolutely. I treasure that particular evening, even today. Again, when the then Chief Justice of India, Altmas Kabir, retired in July 2013, and the new Chief Justice was to be sworn in. We met at the Rashtrapati Bhavan. And the Chief Justice, retiring Chief Justice, Justice Altmas Kabir, I told him
the best product of Punjab University. And you know what was her response? Who has shaped me? Who have mentored me? It is you who has done that. In the year 2014, my nephew's daughter, solo performance, Bharatanatyam, she presided over that. And what she spoke and how she spoke. Coming to December 2016, when she was operated and transplant of kidney, she went through a tough time. In January 2017, she had come back home. Would you believe? She rings me up and says, Bhaiya, I'm back home. I'm feeling good, feel happy. We would be meeting soon. That was the personal touch that she had in our journey for that matter. I wrote her a letter in April 2019, and I like to read out some of the lines that I had written to her. You are, in fact, the pride of the nation. I feel so good when in international forums you conduct yourself with such great grace and elegance. Moreover, what you speak, how you speak, is sui generis, an epitome of humility wrapped in humanity. You are a unique human being. I'm blessed that you were my student, a special one, very dear to. Your health is a matter of concern. You have the blessings of so many. You are fully protected. It's long time that we haven't met. It was so destined we did not meet again. I feel so lonely. The way she would affectionately hug you, the way she would voice herself, the way she would speak, all a part of history now. We miss her. I pay my tribute to her this afternoon. I have chosen to speak to you this afternoon on the topic which was so close to her heart. Independent India belongs to the Constitution. I was trying to count how many times she must have taken the oath in the name of the Constitution. And I cannot really be precise in that, probably 15 to 18 times. She took the oath in the name of the Constitution. And therefore, the Constitution was so close and dear to her, whether she is speaking on the floor of the Parliament or outside. Constitution was a companion throughout for her. Imagine India, independent India, without the Constitution. 1947 to 2022. In fact, the framing of the Constitution started even before 15th of August 1947. The framing started in 1946.
It took 2 years, 11 months, and 18 days to be precise, when on 26th of November 1949, we adopted the Constitution. And on 26th of January 1950, the Constitution came into force. Ansari has so well reflected upon the internal emergency that we encountered. The Constitution was being amended so frequently, and therefore Keshwananda Bharati's case of the year 1973, a case where the basic structure was protected of the Constitution. The Parliament, not to tinker, not to damage, not to destroy, not to amend the basics of the Constitution. It is in Keshwananda Bharati that another concept, constitutional morality, was used for the first time to protect the basic structure is constitutional morality. That is what was held in that particular case. And both these concepts of basic structure and constitutional morality have so developed through the medium of various judgments of the top court of the country. I would only say this: it proved to be the savior of the Constitution. This was really required in that particular context. We talk about not only the basic structure, the constitutional morality. The two shortest articles of the Constitution, Article 14, state shall not deny to any person equality before law or the equal protection. Projects. Equals to be treated equally, unequals not to be treated equally. The basic element which the Supreme Court, through the process of judicial review, has laid down: any action which is arbitrary is also discriminatory and therefore violative of Article 14 of the Constitution. This is the real constitutional morality. Similarly, Article 21 of the Constitution: no person to be denied his right to life and personal liberty, except according to procedure established by law. Procedure established by law, from A.K. Gopalan to Maneka Gandhi. What a change it brought. Procedure established by law means such procedure which is reasonable, just, and fair. That again is constitutional morality. One more article I like to refer, Article 142, ordains that in order to do complete justice, the apex court can pass any order or any decree for that matter. And how meaningfully this particular Article 142 has been interpreted by the Indian Supreme Court, which makes it so very clear that complete justice is above the written law. Like principles of natural justice are the unwritten law to do justice.
Similarly, complete justice also is a penetration of the principles of natural justice in that context. This all could be possible because of the contribution which the Indian Supreme Court has made. But the most significant question is it the parliament which is supreme or the constitution is supreme? This aspect was so dear to Sushma Swaraj. Constitution is the holy book. Parliament can do what the constitution permits the parliament to do, for that matter. Rule of law, be you ever so high, the law is above you. Dharma, in the Rig Veda, it is said, Dharma is the king of kings. Constitution is the king of kings. And therefore, in that particular context, this particular aspect that the parliament can do what the constitution permits the parliament to do. Every legislation is to be tested on the touchstone of the constitution. Why do I say that independent India belongs to the constitution? The three organs of the state, the parliament, the executive, the judiciary, is bound by the constitution. Think not that the judiciary is not bound by the constitution. In fact, all the three organs are the creators of the constitution. And therefore, these three organs can do only what the constitution permits them to do. Yes, within the parameters of the constitution, the parliament is to operate and carry out its legislative duties as such. It is often said that judicial activism, judicial adventurism, why all that? Why should the judiciary be playing such a role where even activism and adventurism comes into play for that matter? I've often asked myself, and when I look back, Sushma ji, in the class itself, I used to teach constitution. And she used to be so involved in that constitution is binding on all, even on the parliament. And once I made it clear, she was so happy because she felt that each organ of the state is to be controlled, is to be regulated. Unbridled power is not a constitutional scheme. Constitution balances each organ for that matter. And therefore, there is no issue and no question of absolute power being carried out in any form for that matter. Therefore, my question is, why not parliamentary activism? If there has been judicial activism, and if the judiciary has provided voice to the silences of the constitution, why not parliamentary activism? You know, if parliamentary activism
comes into operation, it would balance judicial activism. In the sense, if the parliament is active, but active within the parameters of the constitution, certainly the judiciary would have much lesser role to play in that particular context. And therefore the challenge now is the parliamentary activism. In a few days' time, we are looking forward to the Diamond Jubilee celebrations of independent India on the 15th of August, 2022. And on this occasion, I would feel certainly good if the Parliament could come forward, play a dynamic, active role to balance judicial activism as such. This is the need of the hour. When we say that the Constitution is binding on the Parliament, even the opposition parties are bound by the Constitution. I would urge that more of legislations be referred to the committees of the Parliament. The committees of the Parliament, their composition includes not only the members of the majority party, the members of the government for that matter, it includes the opposition parties also. Why am I saying that? The reason being, Constitution is binding not only on the majority party in the Parliament, it's binding on all other parties also. This realization. I recall parliamentary debates. I have been into the working of the committees of the Parliament while being a parliamentary fellow way back in 1968-69. Those committees played such a positive role. The best of legal minds, the best of constitutional minds used to come and give evidence before those committees. There is no dearth of legal and judicial minds or constitutional minds in the Parliament. It needs that they must get together. The goal is common. The object is a common object. And therefore, in this particular context, if they all could get together, work in accordance with the Constitution, play a dynamic role in the Parliament, it would certainly balance judicial review in that context. And therefore, independent India is certainly within the Constitution. And once we realize this, the future of the country is safe, good, protected. It is only the Constitution which regulates the system. Indian Constitution is 72 years old. The US Constitution is as old as 1787. And therefore, in that particular context, the Parliament, the judiciary, the executive need to work together within the framework of the Constitution. Once, if that is done, that would be the ultimate achieving what independent India requires to achieve in that context. And if this recipe could be
made clear as such, it would certainly be something which would be a living tribute to Sushma Swaraj. She would be so happy that the parliament is working in unison. What more is required? And therefore, the unity of the country from the diversity that we have. The Constitution is the binding force. This is the homage that I would love to pay to the departed soul, Sushma Swaraj. May her soul rest in peace. Thank you so much. Thank you, sir, for sharing your thoughts on Srimati Sushma Swaraj and giving us an insight on the Constitution as well. Before calling Shri Satyapal Jain, Srimati Anupama Sharma, our Dean Alumni Relations, Punjab University, has a special message to share with all of us. Ma'am, please join. Namaskar and very good afternoon. I'm really thankful Ma'am, to you are all on the mute. learned Ma'am, speakers. please unmute yourself. I am unmute. Are you able to hear me? Yes. Namaskar and a very good afternoon to all. I'm really thankful to all learned Ma'am, speakers and our distinguished alumni. Ma'am, you are on mute. मैडम अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, उनकी आवाज हमको आ रही है। We उनकी can hear, we आवाज can. हमको आ रही है। आ रही है, आ रही है। आ रही है सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। सर मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ जितने भी लोग आज यहाँ से हमसे जुड़े हैं, स्पेशली श्री बांसुरी स्वराज मैडम, बलराम गुप्ता जी, सत्यपाल जैन जी और सभी हमारे वाइस चांसलर जी, सभी का धन्यवाद करती हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म को आपको इनवाइट करने के लिए यूज करना चाहती हूँ। हम लोग एक ग्लोबल एलुमनाई मीट सेलिब्रेट कर रहे हैं नवंबर 4th and 5th को। So we really request you all, and we hope that because this is a global meet and this is spread over all the departments, university departments as well as colleges. तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सभी कॉलेजेस, बिकॉज 200 कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी के अंदर और 78 डिपार्टमेंट्स हैं, इन 2 दिनों में उस हफ्ते में सभी डिपार्टमेंट्स और कॉलेजेस ये एलुमनाई मीट सेलिब्रेट करें। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से कि प्लीज आप उस एलुमनाई मीट में हमारे साथ जरूर जुड़िए, बिकॉज दैट विल बी इन अ मिक्स ब्लेंडेड मोड। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ फिजिकल मोड में जुड़े, हमारी यूनिवर्सिटी आए। बहुत आभार होगा आपका। Thank you, ma'am, for sharing your special message with Ms. Mansuri Sharma. I now request Shri Satyapal Jain, sir, to kindly share his valuable thoughts with the gathering. आदरणीय प्रोफेसर राजकुमार जी, डॉक्टर बलराम गुप्ता जी, बेटी बांसुरी, देवेंद्र जी और आज के इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे सभी मेरे मित्रों, भाइयों, बहनों, सुषमा स्वराज जी के साथ मेरा पहला संपर्क 1973 में आया था, आज से 45 वर्ष पहले, जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में वो लॉ कर रही थी और मैं एमए पॉलिटिकल साइंस मैंने ज्वाइन किया था। जो वो संपर्क आया, उनके अंतिम सांस तक लगभग 45-47 वर्ष तक हम लोगों ने इकट्ठे काम किया और आखिर तक उनसे मेरा संबंध बना रहा। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि शायद वो दिन आएगा जब मेरे को पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार श्रीमती सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि भेंट करनी पड़ेगी। कभी नहीं सोचा था। उनकी सेहत, उनकी एक्टिविटी देखकर कभी यह आशंका नहीं थी कि शायद भगवान इतनी जल्दी हमारे बीच में से उनको ले जाएगा। लेकिन जैसे वो स्वयं भी कहा करती थी, भरत की वो चौपाई गुरु वशिष्ठ ने जो भरत को कही थी कि सुन रे भरत भावी प्रबल, बिल्ख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। तो जो विधि को मंजूर था उसके सामने 3 वर्षों से हम नतमस्तक हो रहे हैं और उसके अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। सुषमा जी के संबंध में मैंने बहुत नजदीक से उनके साथ अध्ययन किया, उनके साथ अलग अलग राज्यों में गया, एक डेलीगेशन में पाकिस्तान भी गया और लगभग जितने भी उन्होंने चुनाव में नॉमिनेशन फाइल वो करती थी, चाहे राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, लगभग सभी में उनके नामांकन दाखिल करते समय वो मुझे अपने साथ लेकर जाती थी। मैं एक बात कह सकता हूँ, उनके बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है, घंटों बोला जा सकता है, दिनों दिन बोला जा सकता है,
सुषमा स्वराज ने जीवन भर अपने धर्म का पालन किया। मैं एक सेंटेंस में अगर कहना चाहूं, मर्यादाओं का पालन किया। जैसे भीष्म पितामह, सारे महाभारत में कोई भी दौर आया, उन्होंने कभी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी, कभी धर्म का पालन अपमान उन्होंने नहीं किया, धर्म का पालन किया। अभी संविधान के संबंध में बहुत कुछ बोला गया। भारत के संविधान का आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसमें ड्यूटी लास्ट 11th ड्यूटी हर सिटीजन की है, टू स्ट्राइव फॉर अचीविंग एक्सेलेंस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। इस ड्यूटी का अक्षर से पालन अगर किया तो सुषमा स्वराज ने किया। वो डिबेट में 73-74 में हम जाते थे कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, शी वाज द बेस्ट स्पीकर। वो हरियाणा विधानसभा में आई, शी वाज द बेस्ट एमएलए। वो एडवोकेट बनी, बेस्ट एडवोकेट थी। वो संसद में रही, बेस्ट सांसद रही। वो मिनिस्टर बनी, बेस्ट मिनिस्टर रही, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। आज तक भी उनके मुकाबले में कोई दूसरी उदाहरण देना संभव नहीं है। जीवन के जिस दौर से सुषमा स्वराज गुजरी, अपनी अमिट छाप वहां छोड़कर वो गई है। मुझे याद है इंसिडेंट, जब हम पाकिस्तान में गए थे 1958 में एक डेलीगेशन में, तो भारत के एमपीज और पाकिस्तान के एमपीज दोनों की एक जॉइंट सिटिंग हुई थी। पाकिस्तान के एमपीज आकर डायस पर अंग्रेजी में बोल रहे थे, और सुषमा स्वराज जी ने जब अंग्रेजी में, उर्दू में अपनी तकरीर की, सारा पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया था। और लोगों में 2 दिन ये चर्चा होती रही कि भारत से आई हुई और इतनी यंग एज की एमपी और इतनी बड़ी एडवोकेट उर्दू में तकरीर करती है, और पाकिस्तान के एमपीज इंग्लिश भाषा में बोल रहे थे। मैं किसी भाषा के खिलाफ नहीं हूं, मैं जो बताना चाह रहा हूं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इवन कन्नड़। जब वो कर्नाटक में इलेक्शन लड़ने गई श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ, 3 दिन में 4 दिन में कन्नड़ भाषा उन्होंने सीखी, और सारी इलेक्शन कैंपेन में कन्नड़ भाषा के अंदर उन्होंने तकरीर की। ये व्यक्ति की योग्यता, उसका टैलेंट और उसकी जो एक्सेलेंस, पार एक्सेलेंस इन लाइफ का था, ये उसके सबूत मिलते हैं। मैंने संसद में उनकी स्पीचेस सुनी, भाषण सुने। मेरे बहुत सारे उनके साथ संबंध थे। उनके साथ मेरे संबंध एक डिबेटर के नाते भी थे, जो आखिर तक रहे। उनके साथ क्योंकि हम दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे, तो सहपाठी के संबंध भी रहे। उनके साथ हमारे क्योंकि एक ही पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी में, तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भी रहे। वो क्योंकि नेता थी, मैं छोटा सा कार्यकर्ता था, तो नेता और कार्यकर्ता के संबंध भी रहे उनके साथ मेरे। मैं उनसे जो सीखा जीवन में, जो भी करो ईमानदारी से करो, प्रामाणिकता से करो, कोई कमी कसर किसी में मत छोड़िएगा। जो चीज भी वो करती थी, पार्लियामेंट में बोलती थी, तैयार होती थी, हमेशा उनके सामने एक लक्ष्य होता था कि मैं किसी किस्म की कोई तैयारी में मेरी कमी ना रहे, मैं बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन करूं, और वो देख के करती थी। मुझे याद है लोकसभा में जब अटल जी के नो कॉन्फिडेंस मोशन पे उनकी स्पीच हुई, मैं उस समय लोकसभा में मौजूद था। किस तरीके से पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ सारे सदन ने उनकी वो स्पीच सुनी थी। जान होती थी, कंटेंट होता था, डिलीवरी होती थी। वकील रही, बेहतरीन वकील रही, सांसद रही, बेहतरीन सांसद रही। आज जब वो दुनिया में नहीं है, आज हमारे बीच में नहीं है, तो जिस भारत के संविधान के लेकर उन्होंने, अभी बलराम गुप्ता जी ने बताया, 13 बार या 14 बार शपथ ग्रहण की, जो उनके लिए बाइबल और कुरान की तरह था, जिसकी वो शपथ लेती थी, उसकी जो मर्यादाएं थी, जो उसकी अपेक्षाएं थी, जिंदगी भर वो उस पर पूरी उतरी। मैं इतना ही कह सकता हूं, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का या जुडिशली हिस्ट्री का या दुनिया की किसी भी जुडिशियल, पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर अभी नहीं लिखा गया। वो कब लिखा जाएगा कोई जानता नहीं है। ये दुनिया स्टैटिक है। ए हयाती जगना कोई थिर रहा, जिस आसन हम बैठे इससे बैस गया। लोग आगे भी आएंगे, जिन पदों पर बैठकर गए हैं, जिन पर बैठे हैं, और आगे भी लोग आकर बैठेंगे। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि सुषमा स्वराज की जो अमिट छाप है, जो अमिट छाप है, वो सदैव रहेगी। और जीवन के किसी भी क्षेत्र की उदाहरण देनी हो, पार्लियामेंटेरियन की, डिबेटर की, एमएलए की, एडवोकेट की, भाई बहन की, किसी की भी उदाहरण देनी हो, तो आपको सुषमा के जीवन से हमेशा उदाहरण मिलेंगी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं उन्हें अपने श्रद्धा के सुमन भेंट करता हूं, और हमें सुषमा स्वराज जी के जो बताए हुए रास्ते हैं, जो मार्ग हैं, उन पर चलने की भगवान क्षमता दे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. I now request Dr. Babita Pathania to kindly extend a formal vote of thanks. Thank you, Babita.
Thank you, Vibhuti. A very good afternoon to all of you. I deem it a great honor and privilege to pose a vote of thanks on this day to pay tribute to former Union Minister of External Affairs, Shri Sushma Swaraj ji, on her third Punya Smaran Tithi. An eloquent orator and outstanding parliamentarian, she will always be remembered for her powerful compassion and rich contribution to India's democracy. I, on the behalf of Department of Laws, Punjab University, Chandigarh, express my heartfelt thanks to Honorable Vice Chancellor, Professor Raj Kumar, Chief Patron of this program, for sparing a few moments of his valuable time to grace today's occasion, and for his unstinted support and guidance. Thank you, sir. Thank you so much, sir. I express my heartfelt thanks to Miss Bansuri Swaraji, MST Oxford, Barrister at Law, Advocate Supreme Court, for gracing this occasion as the chief guest. We are grateful to you, ma'am, for your insightful address. Thank you, ma'am. Thank you so much. I express my heartfelt thanks to our guest speaker, Professor Dr. Balram K. Gupta ji, Senior Advocate, Director Academics, Chandigarh Judicial Academy, for his explanation of independent India belongs to the Constitution. Thank you so much, sir, for your words of wisdom. Thank you, sir. I express my heartfelt thanks to our special guest, Shri Satyapal Jain ji, Additional Solicitor General of India, for sparing a few moments of his valuable time to grace today's occasion. Thank you, sir. Thank you so much, sir. I express my heartfelt thanks to Professor Anupama Sharma, Dean Alumni Relation, Punjab University, Chandigarh, for sparing a few moments of her valuable time to grace this occasion, to be part of this occasion. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. I express my heartfelt thanks to Shri Arun Grover ji, Shri Parveen Goyal ji, Shri Max Serene ji, Shri Yudhvir ji, Justice S.D. Anand ji, to be the part of this occasion. Thank you. Thank you all. I express my heartfelt thanks to Dayanidhi for his valuable contribution in organizing this event. Thank you, Dayanidhi ji. I express my heartfelt thanks to our Professor Dr. Devinder Singh, Chairperson, Department of Laws, Punjab University, Chandigarh, for his valuable contribution and guidance in organizing this event. Thank you, sir. I express my heartfelt thanks to all teachers who joined online and present here, especially Professor Jyoti Ratan, for making this occasion a memorable one. Thank you, ma'am. Thank you. I express my heartfelt thanks to Dr. Vibhuti, Miss Manisha, for conducting this occasion. Thank you. Thank you. I express my heartfelt thanks to Shubham and Mr. Rotas for supporting us in all our endeavor. Thank you. Last but not least, I thank all online participants for making the time to be with us today and helping us to make this occasion a memorable one. And Dean Elmai. Thank you, sir. Now, with the permission of the chairperson, I would like to end this program. Thank you. Thank you. Thank you, ji. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Thank you, sir. प्रणाम प्रणाम सबको. बेटा कर. Dr. Devinder. जी sir. Let me introduce myself. जी sir. I am Major Gujral. Major. Major Gujral. I express your heartfelt thanks to you to be the part of this. Thank you. I was